Hello and welcome to all of you. I am Zishan Heather and welcome to CSS Smart Cities. And in today's lecture, we are going to discuss an important article that is Ukrainian crisis, international security and foreign policy options for Pakistan. आज के इस करंट अफेयर्स की सीरीज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस जो है वो क्या होंगे थ्रू यूक्रेन क्राइसिस पाकिस्तान के लिए। When Russia invaded Ukraine on 24th February 2022, Russia presented it as a matter of its own under the special military operation. जब रशिया ने 2022 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया, उसने इस मैटर को अपना सोवरेन मैटर जो है वो कंसिडर किया अंडर द ऑपरेशन जिसका नाम था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, बट इट हैज अ मेजर रिपरकशन एज द रीजनल एज वेल एज ग्लोबल सिक्योरिटी। हालांकि रशिया ने जब स्टार्ट किया था इसको अपना इंटरनल मैटर समझ के ऑपरेशन स्टार्ट किया था, बल्कि ऑन द अदर हैंड इसके जो रिपरकशंस हैं वो रीजनल लेवल पे भी हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी लेवल पे भी हैं। It proved to be the most predominant driving force of escalation in the European region, which had huge ramification on the rest of world. ये जो वॉर है इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं या इसके जो इम्प्लीफिकेशंस हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर होंगे। It is a seismic international issue because it has spillover effects on the world security. अब दुनिया की सिक्योरिटी के ऊपर इसके कौन से इम्पैक्ट्स हैं? It will impact traditional and non-traditional security, proliferation of weapons, global energy, economy, refugee crisis, and the food security. ये सारी की सारी एरियाज हैं जिनके ऊपर ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसके अंदर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, वेपन्स की प्रोलिफरेशन होगी, ग्लोबल एनर्जी के ऊपर इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी के ऊपर, रेफ्यूजी क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। It aroused refugee crisis and around 5.8 million refugees from Ukraine moved to the countries like Poland, Hungary and Romania. इस वॉर की वजह से 5.8 मिलियन रेफ्यूजीज जो है वो जिन्होंने मूव ऑन किया टू डिफरेंट कंट्रीज जो कि बॉर्डरिंग कंट्रीज है यूक्रेन के साथ, जिसके अंदर पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया। This war has brought a surge of new challenges for the globalized world and challenge to Pakistan's foreign policy. इस वार ने ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए भी चैलेंज क्रिएट किए हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी चैलेंज मौजूद हैं। The primary imminent threat to international security is the food security. जो प्राइमरी जो है वो थ्रेट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी को, वो फूड सिक्योरिटी का थ्रेट है, which is the second goal of the sustainable development goals by UN. जो फूड सिक्योरिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट गोल है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूएन ने दिए हैं। यूक्रेन एंड रशिया provide ample amount of food for about 400 million people, out of which 50% of sunflower oil, 10% of grains, and 13% of corns are exported by both of the countries. ये जो दोनों कंट्रीज हैं रशिया और यूक्रेन, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर दे प्रोवाइड 400 मिलियन पीपल को जो है वो दे प्रोवाइड फूड। उसके अलावा 50% जो है वो सनफ्लावर ऑयल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, 10% ऑफ ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, 13% ऑफ कॉर्न्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। These
Substantial supplies are exported to the countries like India, China, Pakistan, North African countries, and to Europe. In March, both the countries have imposed ban on the export of fertilizer and food, but the countries like India is making agreement for less price. Analyzing the above statistics, the extraordinary sanctions on Russia have touched the world in a more horrific way, and it has increased the risk of food insecurity. दुनिया ने जो रशिया के ऊपर या दुनिया से मुराद यूरोपियन यूनियन और यूएस ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं इससे एक ह्यूज रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी पूरे ग्लोब के अंदर जो है वो क्रिएट होगी क्योंकि ये दोनों के दोनों कंट्रीज जो है वो 400 मिलियन पीपल को जो है वो फूड प्रोवाइड करते हैं 50% ऑफ द सनफ्लावर ऑयल प्रोवाइड करते हैं और 10% ऑफ ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर और अगर इन रशिया के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लग गए तो वर्ल्ड की जो फूड सिक्योरिटी है वो जो है वो खतरे में पड़ेगी Curiously, the Russian invasion has ignited the issue of energy insecurity in the entire world. इस इशू ने जो है वो एनर्जी इनसिक्योरिटी को भी जो है वो मजीद बढ़ावा दिया है The issue has been further accelerated by the sanctions that are imposed by the EU and the US on Russia. एनर्जी सिक्योरिटी भी जो है वो इसी वजह से उसकी सिचुएशन जो है वो डिटेरिएट हुई है क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं जो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो है वो एनर्जी सप्लायर है It had also impacted the European Union. Currently, they are working on projects to reduce the dependence on the oil and gas till 2024. रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं इसी वजह से जो है वो काफी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको एनर्जी सप्लाई जो है वो इफेक्ट हुई है इसी वजह से रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इस फैक्टर से बाहर आने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज है दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट देयर एनर्जी डिमांड ऑन अदर रिसोर्सेज According to some statistics, European countries were the major importers of Russian oil and gas for about 40 to 49%. जो रशियन कंट्रीज हैं उनकी डिपेंडेंसी 40 to 49% है फॉर ऑयल एंड गैस रशिया के ऊपर एंड जो एशियन कंट्रीज है ओवर 30 to 38% जो है वो डिपेंडेंट हैं रशियन ऑयल एंड गैस के ऊपर इसके अलावा 38% के अंदर 30 to 38% के अंदर एशियन कंट्रीज और जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो डिपेंडेंट हैं This war has also increased the prices of oil unprecedentedly in the international markets to $108 per barrel of crude oil in April 2022. और इसी वार की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ऑयल प्राइस है पर बैरल जो कि इंक्रीज हुई अप्रैल 22 में वो थी $108. Along with its high rate of dependence upon European countries, notably Germany, has been affected so much. जहां पर सब यूरोपियन कंट्रीज इस एनर्जी इनसिक्योरिटी में जो है वो जकड़े हुए हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है वो जर्मनी के ऊपर पड़ा है Furthermore, these crises poses a threat to the traditional security of states and have led to a security dilemma. इस क्राइसिस का और इम्पैक्ट जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे पड़ा हुआ है दैट इज सिक्योरिटी डायलेमा हाउ सिक्योरिटी डायलेमा इज प्रेजेंट इसकी वजह से जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो शेयर है दैट हैज इंक्रीज्ड अप टू 14% जर्मनी का जो इंक्रीज हुआ है वो है अप टू 29% एंड एक यूएस की जो कंपनी है लॉकहेड मार्टिन उसका जो शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ है. These increase shows that the world has gone through a period of extreme uncertainty. This period has been characterized by the rise of the US dollar, the rise of the Chinese yuan, and the rise of the Russian ruble. This period has been characterized by the rise of the US dollar, the rise of the Chinese yuan, and the rise of the Russian ruble.
toward a security dilemma. The world is not unipolar now, but the unipolarity of the world has been challenged, and yet multipolarity is on its rise. Once again, there is a clash between the Western bloc and the Communist bloc. China also support Russia in this cause indirectly because China did not stand in the United Nations resolutions with the Western US bloc. So there is a clash of world powers and the Western US bloc is consistently supporting Ukraine with an economic aid and providing the military assistance. सो इस करंट वॉर के अंदर दुनिया के अंदर दो जो है वो ब्लॉक्स बन गए हैं जिसके अंदर वेस्टर्न लेड यूएस ब्लॉक है और दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसके अंदर रशिया को चाइना जो है वो सपोर्ट करता है सपोर्ट इन द सेंस कि उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर रशिया के अगेंस्ट जो है वो वोट नहीं दिया There is also an imminent threat to Taiwan, as US did not intercept Russia in these crises directly, so it would not be able to constrain China from Taiwan. This would increase the proliferation of conventional as well as non-conventional weapons. The major ramification of the Ukraine crisis is on militarization of countries to ensure its security. और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो इस क्राइसिस का जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पड़ा हुआ है कि दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपनी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसके ऊपर जो है वो बजट लगा रही है ज्यादा because till now $3.4 billion military package has been provided by US to Ukraine along with latest military equipment. Moreover, Russia is nuclear weapon state and if it uses its nukes, so its impact cannot be constrained till Ukraine's border. And the usage of nuclear weapons in the Ukraine is in consideration as the allies of Putin are also advising him. Now, what are the impacts on Pakistan's foreign policy? When it comes to bloc politics, there is always a gigantic pressure on the foreign policy of Pakistan because of the close historical ties with US and China. जब भी ब्लॉक पॉलिटिक्स की बात आती है तो उसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर ह्यूज प्रेशर होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्योंकि पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं उसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशरिंग सिचुएशन होती है This sentiment of neutrality during the visit of ex-Prime Minister Imran Khan to Moscow builds the tension. और इस न्यूट्रलिटी की वजह से जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी रशिया के अंदर उस न्यूट्रलिटी ने भी टेंशंस क्रिएट किए in Pak-US relation. Bilateral relations between the Russia and Pakistan are growing, but not to the pace as with US. हालांकि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो रशिया के साथ इंक्रीज हो रहे हैं बेहतर हो रहे हैं बल्कि उसका जो पेस है वो उस तरह से नहीं है जिसके पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो यूएस के साथ इंक्रीज हो रहे हैं as exports of Pakistan grown at the rate of 13% and imports at 10% annually with Russia जो पाकिस्तान की जो इंक्रीज हुई है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इन exports जो increase हुई हैं that have increased up to 13% और imports जो increase हुई हैं that have up to 10% annually with Russia. Pakistan also abstained from voting in UN, from condemning Russia's aggression along with 34 other countries. पाकिस्तान ने जो रशिया के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन मूव हुई थी उसके अंदर abstain किया. This resulted in a hype of growing mistrust and disrupted the mechanism of communication between Pakistan and US during Ukrainian crisis. पाकिस्तान ने जो
वोट एब्सटेन किया। इसकी वजह से पाक जो यूएस रिलेशन है उसके अंदर एक मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ। Pakistan's move in the UN has provided an opportunity for its historical rival India. ये जो पाकिस्तान ने एब्सटेंशन की है, इसने एक इंडिया को मौका दिया है कि वो अपने ताल्लुकात जो है वो रशिया के साथ इंप्रूव कर सकते। It has also strengthened its ties with US by 2+2 dialogue deal, which followed to BECA, which stands for Basic Exchange and Cooperation Agreement, which is a defense agreement between these countries, India and United States of America. So now what are the recommendations for this issue? For the international security, following are some recommendation. Number first is, firstly, these crises needs to be mitigated by the neutral body. इस क्राइसिस को जो कंट्रोल किया जा सकता है वो फर्स्टली जो है वो यूएन जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है वो उसको पे काबू पा सकती है, because if it is a prolonged too much it would indulge the world into a void, because both Russia and Ukraine are enormous contributor to global source markets in energy, food and fertilizers. Second जो है वो है, a new common and acceptable agenda must be initiated by the UN. जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो यूएन कर सकता है, दैट हैज टू क्रिएट अ कॉमन एंड एक्सेप्टेबल एजेंडा व्हिच इज, जो कि दोनों साइड्स जो कि यूएस लेड जो ग्रुप है उसको भी एक्सेप्टेबल हो और रशियंस को भी जो है वो एक्सेप्टेबल हो। थर्डली जो चीज आती है वो है, disinformation and misinformation must be controlled because both sides are using their national and social media for their own. As early it was speculated that the Ukrainian crisis is purely Russia's internal security. नंबर तीसरी जो चीज करनी है वो है डिस इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल करना है। Finally, one option for Pakistan's foreign policy is to take age of neutrality. As India is also signing agreements with Russia for 30% less price of the oil, while also maintaining strategic ties with the US and signing defense agreement with the US. पाकिस्तान के पास जो एक ऑप्शन है वो न्यूट्रलिटी का है। न्यूट्रलिटी के अंदर पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो अपने स्ट्रेटेजिक जो है वो ताल्लुकात बरकरार रखे और साथ ही साथ रशिया के साथ भी ट्रेड रिलेशनशिप बरकरार रखे। This would help Pakistan to gain its national interests and political objectives from both the blocs, because US still have the status quo and Russia is a rising power after the Soviet Union fall in 1991, and Russia is also supported by China as well. Another option for Pakistan's foreign policy is that Pakistan should revisit its foreign policy with US and take a pragmatic approach. पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन जो कि है वो है pragmatic approach, जिसके अंदर पाकिस्तान यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकता है। This is because historically Pakistan was aligned with US in war on terror, and Pakistan also received economic and financial assistance from US bloc under coalition support fund, and both US and European Union have largest trade relation with Pakistan than Russia. क्योंकि पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ रशिया, और पास्ट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के ब्लॉक के अंदर रहते हुए पाकिस्तान को है वो कोलिशन फंड जो है वो वसूल हुई है। US also have a great amount of trade partnership with Pakistan. Imports of Pakistan from US were 237.092 million during May 2022, while exports were 499.686 million in July 2022. Thus, from the above-mentioned policy option, it can be concluded that Pakistan must condemn the Russian invasion of Ukraine, because this is the violation of sovereignty of Ukraine. Pakistan should not abruptly change its bloc toward Russia, but to continue with the US bloc
because the situation in Ukraine is uncertain and ambiguous. Russian economy is also destabilized, and if Pakistan went toward Russian bloc, it would suffer a lot. Moreover, Pakistan has also better ratio with US and European Union as compared to Russia. Similarly, Russia can also provide oil and gas to Pakistan, providing energy security, but on contrary, US can support Pakistan in economic and defense security as proved in the history because US has provided billions of dollars to Pakistan under different agreements and moreover Pakistan should not left a space to India in South Asia because it can exploit the opportunity of Pak isolation in its own national interest. सो इस आर्टिकल जो कंक्लूजन है वो यही है कि पाकिस्तान के पास जो बेहतर ऑप्शन है इस आर्टिकल के हिसाब से वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया की जो इन्वेजन को है वो जो है वो उसको एब्सटेन करना चाहिए और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो उसके ब्लॉक का साथ देना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री हमें ये बताती है कि उन्होंने हमें मिलिट्री कोलिएशन फंड भी दिए हैं और उनके साथ जो हमारी ट्रेड है वो भी बहुत ज्यादा है सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें